अच्छा जी, okay ji, let's move to steady state error. And now the error, that is the error in fact between the output and input of the system. And if we plot the system, so you are quite familiar with it. So अगर मेरे पास ये system है, ये मेरे पास system है, ठीक? And of course this is RFS, and this is my error signal. We have talked about this error signal, and that's a unity feedback system. So the error between output and input is EFS is RFS minus YFS. ठीक? And we know that TFS जो है, that's the transfer function. It is YFS, output input relationship है, transmittance of the output and divided by input. And as a result of that, you can replace that YFS with TFS, RFS, and finally you will end up with 1 minus TFS into RFS, and that's equal to नई term हम एक introduce कर रहे हैं, that is TEFS, which is nothing but 1 minus TFS. So the error between the output and input of the system has got the transmittance. It is 1 minus TFS, which is in fact EFS divided by RFS. Of course, zero initial condition पे ये transfer function जो है ये आपको मिलेगा. And now this would be called as a TEFS. So TEFS क्या हो जाएगा आपका? Error का transfer function है, which is EFS divided by RFS. The ratio of EFS to RFS, and that is in fact equal to 1 minus TFS. And TFS is what? TFS is nothing but YFS divided by RFS, the actual transfer function of the system. Any questions regarding these equations? सर ये नहीं समझ आया. क्या चीज समझ नहीं? बोले बोले. Sir, these equations, error equations. ये क्लियर है? Yes, sir. इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. TFS is equal to YFS, RFS. We have been talking about this. ठीक है, ठीक. Now I am interested कि मैं error मेरा जो in fact I am interested in steady state error. Steady state error का मतलब ये है कि I am interested in E infinity. E infinity का मतलब है I am interested in E of t, और E of t का मतलब ये है कि I am interested in E of s. ये S डोमेन में मेरी एरर है, ये टाइम डोमेन में एरर है, और ये मेरी स्टेडी स्टेट एरर है. सो मैं देखने के लिए, इन तमाम चीजों को देखने के लिए आई हैव गॉट द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम और द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द सिस्टम. सो फ्रॉम देयर आई कैन टॉक अबाउट दिस EFS. तो ये तो एक रूट है कि मैं EFS मुझे क्यों चाहिए. ठीक है ईशा? Yes, sir. ठीक है, अब आते हैं इधर. सो व्हाट इज EFS? ये मेरे पास RFS आ रहा है, और यहां से मेरे पास ये YFS आ रहा है. इस पॉइंट पे मेरे पास YFS है ना, इस पॉइंट पे मेरे पास ये जो समर मेरे पास लगा हुआ है, दिस इज RFS माइनस YFS. सो दिस इज माय EFS. एग्रीड? Yes, sir. Okay, so what is YFS beta? YFS is can be obtained from here. YFS is nothing but TFS RFS. So just replace that YFS value there, TFS RFS. Agreed? Yes, sir. Okay, sir. Okay, then we have taken the common RFS common लिया, तो this is 1 minus TFS. and अब इस 1 minus TFS को हम एक नया नाम दे रहे हैं, which is TEFS. and TEFS, if you look closely, it is nothing but EFS over RFS ही है. ठीक है, सो इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का अगर मैं EFS over RFS करूं तो अल्टीमेटली TFS क्या हो जाएगा? वो EFS की तरफ ही वापस चले जाएंगे. So EFS over RFS is nothing but 1 minus TFS. So that's the transfer function कह लें, transmittance कह लें, between the output and input of the system. इस जगह पे, इस particular location पे EFS divided by the error, the ratio of the error and your input.
ठीक है, द एरर बिटवीन द आउटपुट एंड द इनपुट, जो कह लीजिए। ठीक है बेटा? Yes, sir. ओके। नाउ स्टेडी स्टेट एरर जो है आपकी, इनफैक्ट जिसकी हम बात कर रहे थे, इस ई ऑफ टी एंड अल्टीमेटली ई ऑफ इंफिनिटी के कंटेक्स्ट में बात हो रही थी। सो कोई भी आपके पास द पोर्शन है ई फोर्स जो है, पहले वाई फोर्स की बात कर लें तो वाई फोर्स आइडियली कहाँ जाना चाहिए बेटा जी? जो फोर्स रिस्पांस है उसको कहाँ जाना चाहिए? उसको जाना चाहिए जो एक्सटर्नल इनपुट है आपकी। एक्सटर्नल इनपुट क्या है आपकी? दैट इज आर एफ टी है। यानी हम चाहते हैं कि हमारा नेचुरल कंपोनेंट जो है वो डाई डाउन कर जाए अपने वाई एफ टी का, और अल्टीमेटली जो फोर्स कंपोनेंट ऑफ वाई एफ टी है वो आर एफ टी को, जो कि एक्सटर्नल इनपुट है, वो उसको ट्रैक करना शुरू कर दे, वो उसको अप्रोच करना शुरू कर दे। जिस तरह से वाई एफ टी जो है वो उसके दो कंपोनेंट हैं, इसी तरह से आपके एरर कंपोनेंट जो है उसके भी दो कंपोनेंट हैं। one is the forced component and the second one is the natural component. So the steady state error क्या है हमारी? steady state error हमारी ये होगी कि वो हमारे पास of course natural component जो error का है, the force component error का है, that is equal to RFT minus y forced। और ideally हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि y forced जो है that should be equal to RFT। so steady state में आपके पास क्या होना चाहिए? perfect tracking के वक्त हमारा जो E forced of t है that should be equal to 0। जैसे ही ई फोर्स जो है, अगर मैं इस जगह पे आऊं, ये जो हम यहाँ पे जब हम स्टेडी स्टेट में पहुंच रहे हैं तो यहाँ पे मेरे पास y ऑफ t जो है, y फोर्स जो है दैट इज अप्रोचिंग r ऑफ t, दैट इज माय वन जो है, दैट इज माय एक्सटर्नल इनपुट, दैट इज r ऑफ t। सो इसका मतलब है y फोर्स जो है नेचुरल कंपोनेंट डाई डाउन कर रहा है, और मेरा जो y फोर्स है दैट इज अप्रोचिंग माय एक्सटर्नल इनपुट। लेकिन एट द सेम टाइम ई फोर्स जो है दैट इज इक्वल टू 0। जैसे ही ये 0 होगा तभी आई वाई फोर्स जो है दैट वुड बी इक्वल टू आर एफ टी। सो क्लियर हुई ये बात कि किस तरह से स्टेडी स्टेट एरर को डिफाइन किया गया है। सो फॉर अ परफेक्ट ट्रैकिंग सिस्टम y forced of t should be equal to rft, which is the external input or the input we are tracking, and as a result of that we want that e forced of t should be equal to 0। जी कोई क्वेश्चन? No, sir. इरफान? नो सर। नो सर का क्या मतलब है? कुछ क्लियर है? नो सर क्या मतलब? आज क्वेश्चन का जवाब दिया, ठीक है। आप मुझे बताएं ना कि क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, स्टेडी स्टेट एरर का कांसेप्ट क्लियर हो गया? सर कुछ हद तक क्लियर हो गया, बाकी सारा रिवाइज करेंगे तो मजीद क्लियर हो जाएगा। आप इसे रिवीजन पे क्यों रखते हैं? उसी वक्त पे क्यों नहीं खत्म करते कि ये चीज मुझे उसी वक्त आ जाए? और वो रिवीजन कभी नहीं हो पाती। जी इब्राहिम? यस सर, क्लियर है सर। क्लियर है, ओके जी। नाउ एज आई सेड अर्लियर कि हम in this chapter we will be interested in knowing the steady state errors, and in particular we will be interested in knowing the steady state errors to the power of time inputs। power of time inputs से मेरी क्या मुराद है? सपोज आर एफ टी, अगर मेरा आर एफ टी जो है if that is equal to t, so it is what? Sorry, it's not t, it's not t, sorry. So I will start from u of t. So it is what? It is step function या unit step function, ऐसे ही है। यस सर। ओके, अगर मेरे पास आर एफ टी जो है that is equal to t u of t, this is RAM, agree? यस सर। ओके, अगर मेरे पास आर एफ टी जो इसी तरह से मैं पावर बढ़ाता जा रहा हूँ, in fact t raised to power 2 u of t, that is in fact parabolic, half parabolic input।
सो ये जो लिखा हुआ है पावर ऑफ टाइम इनपुट्स, इस बात का मतलब यही है, दिस इज टी रेज टू पावर 0 u of t, this is t raised to power 1 u of t, this is t raised to power 2 u of t, and similarly we can raise these values, and we are interested कि किस तरह से हमारा सिस्टम जो है, कोई भी सिस्टम हमारा इस तरह की इनपुट्स को ट्रैक करता है, ठीक है। सो इनफैक्ट अगर मेरे पास आर एफ टी यू ऑफ टी है तो my output will be the Laplace domain transfer function will be equal to 1 over s, or 1 of s in case के ramp function it is 1 over s square, इस case में it is 1 over s cube. So that's the generalized expression. So r I of s will be equal to 1 over s raised to power I plus 1, and this is I. ये आपके पास I है, I is equal to 0 है यहाँ पे, तो in that case that would be equal to 1 over s, 0 plus 1 1 over s. इस केस में t is equal to I is equal to 1 है, तो क्या हो जाएगा s raised to power 1 plus 1 1 over s square, so this is 1 over s square. इस केस में मेरे पास I जो है that is equal to 2, so 2 के केस में 1 over s2 plus 1, that is 1 over s cube. So इस स्लाइड का मतलब यही है कि you should be aware of what are the power of time inputs and what are their Laplace transforms of those. ठीक है जी, and we are interested कि हम E of infinity, the steady state error में हम interested, यानी E of t पहले find out करें, या E of s हमें पता हो, E of s से हम E of t की तरफ जा सकते हैं, और E of t से हम अपना time t is equal to infinity पे find out कर सकते हैं. But there is another way, and we had done it, the final value theorem and initial value theorem. We can use those theorems as well, and when we will be using those theorem, we don't need to have a transit from this E of t. We can get the final values using the formula of final value theorem, and we will be getting that E of infinity. Okay, so we will be looking at that as well. Okay, now the steady state errors. If the input to the tracking system is power of time input, जो कि हमने any of these, जो भी कोई input अगर system को हम दे रहे हैं, the error signal is given as EI of s, so I is associated with the power of time, that is equal to TE of s, RI of s. कहाँ से आ रही है ये term? ये term आ रही है आपके पास because we had said that TE of s is equal to E of s divided by R of s. So we are saying कि R of s जो है, अगर हम इसको कह लें RI of s, which is associated with the Laplace transform of the power of time inputs, so in that case what will be my EI of s or E of s? That would be equal to TE of s into RI of s. And you know that what RI of s is, it is 1 over s raised to power I plus 1, so that's just the thing. And now this error will be having two components, the natural response term, and that would be coming from the poles of TEFS. Remember that the poles of TEFS are the same as the poles of TFS. ठीक, यहाँ से आपको नजर आ जाएगा if you are interested. So 1 minus TFS is TFS. कोई भी poles अगर आप उठाएंगे, the characteristic polynomial will not change. So as a result of that, TFS का जो natural component है, that would be coming from the characteristic polynomial of the TFS, because the characteristic polynomial of the characteristic roots of TFS and TEFS are the same. So as a result of that, we are saying that the natural response term is coming from the poles of TEFS or poles of TFS. It's the same thing. And forced response is coming from the ith degree term. ये आपका forced response जो है वो यहाँ से आ रहा है, which is quite obvious के जो input है आपकी forced response जो है वो यहाँ से आता है. Any questions regarding this? Ibrahim? No sir, no questions. Isha? सर ये आपने 1 ओवर s की पावर i प्लस 1, सर ये बता दें सर ये कैसे आया सर? आपका नाम क्या है बेटा? उसामा सर. उसामा बेटा ये यहाँ से आ रहा है, ये अभी हम बात कर रहे थे RI of s is equal to 1 over s raised to power I plus 1.
and in fact I is associated with the power of time. ये जो inputs हैं आपकी time domain में, हाँ ठीक है उनमें सर, t ठीक का है, power जो है वो कहाँ से आ रहा है, तो ये उससे associated है. हमने आई पावर डिफाइन किया है, ठीक है सर. ठीक है जी. हलीमा बीबी, मोहम्मद अली, any questions? सर समझ आ गई. Okay, great. So suppose मेरे पास मेरे पास सिस्टम है TFS which is equal to 6 divided by s square plus 3s plus 2, and I'm interested in TEFS, error transmittance. क्या हो जाएगी इसकी जी हलीमा, क्या हो जाएगी error transmittance TEFS? अब विजुलाइज करना है तो इसको इस तरह से देखना है. That's my TFS. ये आउटपुट है. वन माइनस टी ऑफ एस. थैंक यू बेटा. ये RFS है, ये EFS है. ठीक. So TEFS is the transmittance input and error signal है. RFS और इसके EFS over RFS है. So इस बात का मतलब ये है कि TEFS is 1 minus TFS. We have already seen it. Probably we have done it here. This is 1 minus TFS. This is equal to TFS. So as a result of that, when we see it is 1 minus 6 over s square plus 3s plus 2, what I wanted to show you here that it is nothing but, अगर आप इसको solve करें, that is s square plus 3s minus 4 divided by s square plus 3s plus 2. Now look at the characteristic polynomial. This is the characteristic polynomial of TFS, and that's the characteristic polynomial of TEFS, and that would remain the same because TEFS is equal to 1 minus TFS. So characteristic polynomial change नहीं हो रहा. इसकी वजह से आपको zeros की locations आ रही हैं, ये सारी चीजें आ रही हैं, लेकिन poles अपनी जगह पे मौजूद हैं closed form transfer function में. Agreed? So that's why we were saying that the natural response is coming from the poles of the TEFS. And the forced response अभी हम देखते हैं किसके साथ क्या होगा. जी बोले. सर इसमें हमेशा जो हम ये लेंगे सिस्टम सर, इसमें हमारे पास यूनिटी गेन ही होगा. Not necessarily. ये तो हम सिर्फ एक ट्रैकिंग सिस्टम को एग्जेम्पलरी एक वो देख रहे हैं कि किस तरह से. राइट सर. ओके अच्छा, अब आते हैं इसी में एरर टू स्टैंडर्ड रैंप इनपुट क्या होगी इसकी. अगर रैंप इनपुट है, इस बात का मतलब ये है कि मेरा RFS जो है वो क्या होना चाहिए, 1 over s square. So अब मेरे पास EFS जो है, because I'm interested in knowing कि what will be my error for this RFS, यानी RFS जो है that is 1 over s square. I'm interested in knowing what is my EFS, and EFS is nothing but TEFS, which I know now, transfer function मुझे पता है, into RFS, and that is in fact equal to s square plus 3s minus 4 divided by s square plus 3s plus 2, and RFS की वजह से 1 over s square ये आपके पास आ गया. And ultimately you will be solving it with the that would be s square plus 3s minus 4, और जो characteristic polynomial है that would be changed into s plus 1 and s plus 2 terms, and of course rest you know, कोई मसले वाली बात नहीं है. a over s plus b over s square plus c over s plus 1 plus d over s plus 2, something like that. और अगर आप इसको solve करें तो you will be getting it is 9 over 2s plus b is equal to minus 2 over s square plus minus 6 over s plus 1 plus 3 over 2 over s plus 2. So what is the natural component, forced response component, and what's the natural component?
अभी थोड़ी देर पहले कहा है मैंने. Natural response component is coming from the poles of TEFS or TFS, and forced response is coming through the ith degree term. So that is your natural response component coming from the poles of TEFS. These are the poles of TEFS. And that's your forced response component that is coming from the ith degree term. R of t क्या था? Tu of t था, which was equal to 1 over a square. So that is the ith degree term जो आपके पास मौजूद थी. I was equal to 1 था. So इस केस में आपके पास ये दो टर्म्स जो है 9 over 2s minus 2 over s square जो है आपके पास आ गई. ठीक. So अगर मैं E of t लिखना चाहूँ, what it will be? है कोई वॉलंटियर E of t लिखवाने वाला? इरफान. सर r of 9 t by minus 2 into e raised to power minus t 0. 9 by 2 सिर्फ. हैं जी? 9 by 2. 9 by 2. Good. शाबाश. Then minus 2 minus 2 into t into t. Very good. minus 6 into e raised to power minus t Excellent. plus 3 by 2 into e raised to power minus 2t. Great. Sorry, So again, that's your natural response component and that's your force component. So, ठीक है जी. So हमने ये जो चीज थी हमने इस चीज को देख लिया कि whenever we will be having any error, we will be talking about EIFS in input to the error of the tracking system in case of any input, power of time input. In that case, the error will be consisting of two portions. One is the natural response term and the other is the forced response term. Natural response term is coming from the poles of TEFS, and the poles of TEFS are the same as the poles of TFS. And the second is force response term, which is coming through the ith degree term. And we have seen that we have taken one transfer function. ओपन लूप एक आपके पास TFS मौजूद था और TFS से आपने TEFS फाइंड किया, and then for an RFS is equal to 1 over s square, we have obtained EFS, and that's my EFS. और EFS से मैं EFT की तरफ गया, और EFT is nothing but the combination of the force response term and the natural response term, and we can watch that force response term is responsible of the ith degree polynomial जो आपके पास inputs हैं, और जो आपके पास natural response term है that is coming from the characteristic polynomial या characteristic जो आपके पास roots हैं of the TEFS और TFS वहां से आ रहा है. Agreed? Yes, sir. Okay. So for a stable system driven by power of time inputs, the forced component of the error can do only one of these three things. I'm talking about this term. जब भी हम कभी अपने सिस्टम को देखेंगे जो कि स्टेबल होगा एंड विच इज ड्रिवन बाय पावर ऑफ टाइम इनपुट्स, यानी सपोज उसकी इनपुट स्टेप इनपुट भी हो सकती है, उसकी इनपुट रैंप इनपुट भी हो सकती है, वी कैन हैव पैराबोलिक स्टैंडर्ड पैराबोलिक इनपुट भी हो सकती है, एंड सो ऑन. बट वन थिंग इज इम्पॉर्टेंट दैट द वी विल बी हैविंग द फोर्स रिस्पॉन्स टर्म जो है उसके अंदर दैट वुड बी हैविंग थ्री ऑप्शंस, या तीन तरीकों से वो बिहेव कर सकती है. द फोर्स्ड एरर कैन बी जीरो, यानी फोर्स्ड एरर जीरो किस वक्त होगी? जब आपका वाई फोर्स जो है वो आपके साथ मैच कर जाएगा आपकी RFT के साथ, या जो आपके एक्सटर्नल इनपुट है. द फोर्स्ड एरर कैन बी कांस्टेंट, बिकॉज अगर ऐसी सिचुएशन बनती है, बल्कि यहीं पे देखते हैं इसको, अगर इस तरह की सिचुएशन है मेरे पास टाइम रिस्पॉन्स की, सो सपोज मेरे पास ये RFT है,
सो y of t अगर मैं प्लॉट करना चाहूँ, सो एक ऑप्शन तो ये है मेरे पास कि मैं और फिर मैं स्टेडी स्टेट वैल्यू को रीच कर लूँ। एंड देयर इज वन मोर ऑप्शन कि ऐसा भी हो सकता है और फिर मैं स्टेडी स्टेट मेरी जो है दैट हैज़ गॉट अ कांस्टेंट एरर जो है मेरे पास मौजूद है विद द RFT जो मेरे पास, so that's my the forced error can be a constant, so that's my forced error, and the forced error can involve a non-zero term proportional to t or higher powers of t, and in that case that would be the situation कि आपके पास जो भी आपकी इनपुट होगी as a result of that you will be having a ब्लो अप कर रही होगी, आपकी एरर जो है इन्फिनिटी की तरफ जा रही होगी, स्टेडी स्टेट एरर जो है आपकी। सो लेट्स सी ऑल दीज थ्री केसेस, बट बिफोर मूविंग देयर आई वुड लाइक टू रिवाइज द इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम्स, बिकॉज द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आप YFS में बैठे हुए हैं या EFS में बैठे हुए हैं एंड यू हैव टू फाइंड आउट YF इंफिनिटी और या EF इंफिनिटी, तो आपके पास तरीका क्या है कि आप YFT फाइंड आउट करें, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लें, या EFT फाइंड आउट करें, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लें एंड देन पुट t इज इक्वल टू इंफिनिटी, और फिर आपको जो है ये YF इंफिनिटी और या EF इंफिनिटी मिल जाए। There is another way that using the final value as and initial value theorems, so directly जो है आप sitting in YFS and sitting in EFS, you can be Laplace domain में बैठे हुए ही आप अपने final values या initial values जो है वो find out कर सकते हैं। So that's the situation. YF0 is in fact equal to limit s tends to infinity as YFS. We did it in our second lecture or third lecture. And similarly, if we are interested in final value, so the YF infinity will be equal to limit s tends to 0 as YFS. And let's see कि किस तरह से ओके चलें ज़रा थोड़ा सा इसको देख लीजिए कि एप्लीकेशन ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम्स टू रिप्रेजेंटेटिव लैप्लास ट्रांसफॉर्म टर्म्स। सो देखिए मेरे पास अगर YFS जो है वो a है, ठीक है, तो इनफैक्ट टाइम फंक्शन जो है इसका दैट इज a डेल्टा t, ठीक, सो ये इनिशियल वैल्यू है a डेल्टा t की, ये इनिशियल वैल्यू है और ये इसकी फाइनल वैल्यू, एग्रीड और नॉट। इनिशियल वैल्यू ठीक है ना? यस सर। इसी तरह से स्टेप फंक्शन अगर आप देखें दैट इज समथिंग लाइक दैट। स्टेप फंक्शन की इनिशियल वैल्यू क्या है? दैट इज a, अगर यूनिट स्टेप नहीं है और a स्टेप फंक्शन है, एम्पलीट्यूड a है उसका, इन दैट केस द इनिशियल वैल्यू इज a एंड द फाइनल वैल्यू इज a एज वेल। इसी तरह से a ओवर s स्क्वायर की अगर हम बात करें दैट्स अ काइंड ऑफ रैंप फंक्शन। तो रैंप फंक्शन किस तरह की चीज है? समथिंग लाइक दैट et। तो इस केस में इनिशियल वैल्यू क्या है? दैट इज इक्वल टू 0 एंड फाइनल वैल्यू क्या है? दैट इज इक्वल टू इंफिनिटी। a ओवर s प्लस a सिंपल डिकेइंग टर्म जो आपकी है उसमें आपके पास समथिंग लाइक दैट बनी। सो इनिशियल वैल्यू इज a, फाइनल वैल्यू इज 0 एंड दिस इज डिकेइंग टाइम फंक्शन क्या है आपका? टॉ जो है दैट इज इक्वल टू 1 ओवर a पे आप डिके कर रहे हैं। इसी तरह से साइन टर्म्स और कोसाइन टर्म्स जो हैं उनकी फाइनल और इनिशियल वैल्यूज जो हैं वो आपके सामने मौजूद है। एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस? जस्ट यूजिंग द फाइनल एंड इनिशियल वैल्यू थ्योरम्स वी हैव obtained these things. We were sitting there, we have used the final value and initial value theorem. Suppose final value आपके पास क्या होती है? That is y of infinity, या यूं कह लें कि y of t limit t tends to infinity, that is equal to limit s tends to 0 as y of s. So if I'm interested in this thing, so that would be what? That is a over s into s, that would be cancelled out, limit s tends to 0, that's equal to a. That's the final value. Time domain की final value है which we have obtained sitting in the s domain, और हम टाइम डोमेन में हमने ट्रांसफॉर्म नहीं किया। Similarly, if we are talking about this ramp function,
a over s square, यानी आपके पास yfs जो है it is a over s square, and we are interested in y of infinity, which is nothing but limit t tends to infinity y of t, and that's equal to limit s tends to 0 s y of s, and that's equal to limit s tends to 0 a over s क्या हो जाएगा agreed. Yes, sir. Okay, so again जो चीज हम देखना चाह रहे हैं वो ये है, for a stable system driven by power of time inputs, the forced component of the error can do only one of the three things. The forced error response component of the error is 0. After the natural response dies, the error is 0 and the tracking system output will be equal to the power of time reference input. So perfect tracking होगी इस केस में, यानी y forced जो होगा आपका that would be equal to r of t. Perfect tracking, the forced error term जो है वो आपकी अगर 0 हो गई है तो इसी तरह से the forced error can be a constant, so that after the natural response has decayed to 0, the error is constant and the tracking system output and the reference input differ by that constant value. इस बात का मतलब क्या होगा कि इस केस में y force जो है that would be equal to r of t plus some constant. इस केस में y force जो है वो r of t के इक्वल हो गया, यानी इसके ऊपर पहुंच गया, वो स्टेडी स्टेट में जो भी आपकी r of t थी उसके ऊपर पहुंच गया. लेकिन अगर आप इस रेड को देखें तो इस केस में क्या है, r of t प्लस माइनस सम कांस्टेंट वैल्यू. सो आपकी जो y forced है वो इस तरह से चलेगा, एंड e forced जो है दैट वुड बी सम कांस्टेंट वैल्यू. एंड फाइनली द forced error can involve a non-zero term proportional to t or a higher power of t, and the error grows without any bound, so E of t will be infinity in this case. Yeah, E of at time t is equal to infinity, that would be infinity. So in this case, if E of s has okay, let's talk about that further. Okay, example देखते हैं तो यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें जो है वो clear हो Excuse me, sir. जी बिस्मिल्लाह बोलिए. Sir, class 11:40 तक है. Oh, 11:40 तक है. अच्छा चलें, I'm stopping it here and we will be continuing from this example and this portion. But before moving, I would like कि हम attendance जो है वो ले लें. थोड़ा सा मुझे टाइम दे दीजिएगा.